दो सेगमेंट हैं वो डॉक्टर शकील फ्रॉम बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर से वो प्रेजेंट करेंगे। तो अभी सारे पार्टिसिपेंट का मैंने माइक्स जो हैं वो म्यूट पे लगाए हुए हैं। एनीवन वांट टू ऐड समथिंग या आस्क एनी क्वेरी they can use the hand raise option. I will unmute you. And over to Dr. Raza Ali. Please proceed. जी डॉक्टर रजा। जी डॉक्टर रजा प्रोसीड करें। जी डॉक्टर साहब साकिब अभी डॉक्टर रजा को थोड़ा प्रॉब्लम है, डिस्कनेक्ट हुए हैं। जो ही कनेक्ट बैक होते हैं तो फिर मैं इशू हल करता हूँ। जी डॉक्टर रजा आप अनम्यूट करें। अनम्यूट हो गई। जी स्क्रीन शेयर करें और करें प्रोसीड। ठीक है। जी सर। जी ओके प्रोसीड। Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss inhalational anesthetic agents. I am Dr. Sayyid Raza. I am resident of MS Anesthesia at Rawalpindi Institute of Cardiology. We are 4 residents, and we will start with the first of all the enumeration of the outline. I have divided this presentation into 3 separate parts. The first part is about the properties of an ideal anesthetic agent. Of
or the anesthetic induction and maintenance. It depends upon agents. And here we'll discuss the factors affecting inspired alveolar and arterial concentration, then mechanism of action of the anesthetic agents, inhalational anesthetic agents. Then we'll learn about the blood gas partition coefficient, MAC value, systemic effects of inhalational anesthetic agents. These four headings in the pharmacophysiology will deal with the generalized concept of these concept of the action of these inhalational agents, and in the third category we'll discuss the characteristic features of inhalations. So first of all, going through the properties of ideal anesthetic agents, ideal inhalational agents. These are the these are about the physics, color, the stability, temperature. So they should be stable at extremes of temperatures. They should not be degraded by by exposure to light. They should not require any preservative for preservation. They should not catch fire. Therefore, non-explosiveness is the key feature. They should be odorless. They should have pleasant smell. They should interact lesser with other drugs, and the boiling point should be well above the room temperature, so that this may not lead to boiling of the gas at room temperature. Then moving towards the pharmacologic properties of an ideal anesthetic agent. These pharmacologic properties are relevant to the different body systems. These systems are central nervous system, cardiovascular system, respiratory system. So these are the three major systems where the pharmacological effects of these anesthetic agents will be manifested. First of all, the and it should be under our control. If the anesthetic agent is going to have analgesic, antiemetic, and muscle relaxant properties, it is beneficial. It will lead to the augmentation of the other anesthetic drug effects. Then those inhalational agents which are pungent or irritant, they lead to the airway irritation. So there should be minimal airway irritation and minimal, and cardiovascular depressant effects should be minimal. Some of the agents have epileptogenic activity, so the one which is and they should have minimal effect on the uterine smooth muscles. And another feared complication during anesthesia is a malignant hyperthermia. So ideal hyperthermia and low blood gas and oil gas solubility coefficient. And 10th one is it should be excreted by the lungs, as these inhalation agents produce their effects by the respiration. So it is an ideal agent would have the excretion through the lungs, and the other routes like renal and respiratory, they should not be utilized by the inhalation agents. And active metabolites should be minimal. Now coming towards the second portion of the presentation, that is the pharmacokinetics of the inhalational agents. These pharmacokinetics are the basically effects of the drugs on the body. There are two categories: pharmacokinetics and dynamics. Dynamics are the effects of drugs on the body, and kinetics are the effects of body and the drugs. So among the pharmacokinetics, first of all, we'll see the inspiratory concentration.
this is the concentration of the inhalational agent before entering into the lungs. So it depends upon the fresh gas flow rate, the volume of the breathing circuit, and the circuit absorption. So greater the volume of the circuit and greater the absorption by the circuit, so lesser will be the inspiratory concentration delivered to the lungs. Then is the FA or alveolar concentration of the inhalational agent. The alveolar concentration is affected by the three factors. First one is the gas uptake into the blood, second is the ventilation, and third one is the second gas effect. So, greater the uptake of the gas into the blood, lesser will be the concentration left behind in the alveoli, and the drug will take longer times to produce its effects. So, uh, this is uptake into the blood is inversely proportional to the onset of action of the drug. Second one is the ventilation. So, greater the ventilation, lesser would be the amount of the inhalation in two forms. One is the concentration effect, and second one is the augmentation of alveolar ventilation. So, second gas effect is in context to the nitrous oxide, as the nitrous oxide has the greater tendency to be taken up by the blood. So, if nitrous is being given mixed with some other inhalational agent, what will happen? The nitrous will leave the alveoli quickly into the blood, while the other inhalational agent will take time to leave the alveoli. And ultimately, this will lead to the increased concentration of the agent other than nitrous in the alveoli. And consequently, it will lead to the earlier onset of action. This is called the concentration. Due to the rapid movement, the alveolar ventilation is augmented. So the clinical application of second gas effect is if we induce the patient with an inhalational anesthetic agent where we give nitrous oxide along with the sevoflurane, isoflurane, or any other of the drugs, it will lead to, and as well as the second completely diffusion hypoxia. It is also due to this effect of the blood. It while we turn the nitrous off, it leaves the blood and comes to the alveoli in a quick manner, same as it left before, and it will lead to the increased or buildup of concentration of nitrous in the alveoli, leading to the decrement in oxygen concentration of the alveoli. This is called if the ventilation is decreased or there is some barrier in ventilation, there is edema within the alveoli, or some there is fibrosis or any factor that रजा, इसमें अगर 1 मिनट आपको इंटरप्ट करूंगा, अगर ये स्क्रीन का साइज फुल कर दें आप, तो हो सकता है आपकी तरफ से?
of inhibitory neurotransmitter pathways and pathways. Initiated, it leads to the CNS depression. And leads to the augmentation of the previous effect. So the GABA and glycine, the receptors in the central nervous system, they are the inhibitory neurotransmitters. So inhalation, there is a chloride channel associated with the GABA and glycine. Volatile anesthetic agents bind with these receptors, leading to the entry of chloride ions into the neurons and ultimately hyperpolarization. And this hyperpolarization prevents the excitation of the neurons. Then inhibition of excitatory neurotransmitter pathways, which are NMDA receptors, and then analgesic properties of nitrous oxide are due to potentiation of opioid receptors, while none of the other inhalational agent leads to potentiation of opioid receptors. Okay. Now we'll look upon the blood gas partition coefficient, which is also known as lambda B over G. So, blood gas partition is the ratio which determines how much concentration of inhalational agent reaches the blood. So, greater the blood gas partition coefficient, greater will be the drug reaching into the circulation, and vice versa. So here I have demonstrated that greater the blood gas partition coefficient, greater will be the uptake of agent into the blood, and so less amount of the drug will remain in the alveoli, leading to the increased time taken for induction. And then there are different blood gas partition coefficients for different agents. For halothane, it is the greatest. 2.4 isoflurane, it is 1.4, sevoflurane 0.65, nitrous 0.7, and desflurane 0.42. So desflurane is having the minimal blood gas partition coefficient, which states that the onset of action of desflurane will be rapid as compared to the other ones. Concentration in the alveoli, therefore more time taken to build up the MAC and ultimately the onset of action. Now we come to the MAC value, minimum alveolar concentration. So it is the minimum amount of inhalational agent present in the alveoli that leads to the depression of the response to the standard surgical stimulus in 50% of the population. Below are the MAC 50 and 95. MAC 50 means that there will be inhibition of response to surgical stimuli in 50% of the population, while MAC 95 denotes that 95% population of the patients will not express the response to standard surgical stimulus, which means that MAC 95 is higher than MAC 50. Then there is MAC awake and MAC bar. MAC awake is the minimum alveolar concentration required to keep the patient awake as well, where the patient can respond. It is 0.3 times the normal MAC required, and MAC bar is the
जी रजा मेरे ख्याल में डिस्कनेक्ट हो गए। अनम्यूट करें। जी सर, अभी आवाज़ आ रही है सर? जी जी आ रही है। स्क्रीन शेयर कर लें। जी सर, सिग्नल का इशू आ गया था, सॉरी सर। जी 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 सर। कंटिन्यू करें। जी सर। So we were discussing this. Nitrous is having the greatest MAC value, while halothane is having the lowest MAC value, which means that halothane requires less concentration for onset of action, so it will have most rapid onset of action, while the nitrous will take greatest time for the onset of action. Now we'll see some factors which are going to affect the MAC value. First of all is the temperature. Both hypo or hyperthermia, they lead to the decrease in MAC value. Straight otherwise, they will lead to the um, uh, rapid onset of action. Then in the young patient, there is more MAC value required, while in elderly patient, MAC value requirement is decreased. And then acute alcohol intoxication will require lesser MAC value, while chronic abuse is going to have increased requirements. Then anemia and hypoxemia both require lead to the decrease in the MAC value, and hypercapnia or CO2 greater than 95 will lead to the decrease in the MAC value as well. Then there are some drugs that lead to the decreased MAC requirement. And these drugs are local anesthetic agents, opiates, ketamine, barbiturates. All the anesthetic agents, the IV induction agents will lead to the decreased requirement of the MAC value. Okay. Now the pharmacodynamics of the inhalational agents, which are the effects of drugs on the body. We'll see these effects in systemic manner. First of all, the cardiovascular system, all the inhalational agents, they are going to lead towards the cardiovascular depression, except the nitrous oxide. And the greatest effect is by the isoflurane on cardiovascular depression. Then on the respiratory system, all agents except nitrous will lead to the decrease in tidal volume and increase respiratory rate. Will the depression coming towards the cerebral rate. So all the inhalational agents will lead to the increase in cerebral blood flow and increase in the intracranial pressure. And the greatest rise in the cerebral blood flow and ICP is by the halothane.
Okay. Then neuromuscular blockade by the non-depolarizing muscle relaxant will be potentiated by all the inhalational agents, and the greatest by potentiation by the isoflurane. Then renal and hepatic both system, all the anesthetic agents, inhalational agents are going to lead towards the decrease in hepatic and renal blood flow. Thus, the decrement in the renal blood flow will lead to the decreased GFR and urine output as well. So, these were the pharmacodynamics of inhalational agents, and now we'll discuss each of the anesthetic agents individually. First of all, coming towards the nitrous oxide, which is also called laughing gas. It sports burning, and it is a gas at room temperature. And nitrous oxide is banned in the cardiac ORs because of the problem that it leads towards the increment in the pulmonary vascular resistance. Teratogenic in pregnancy, so nitrous should be avoided in the pregnant patients, and it also leads towards the growth retardation dependent enzyme inhibition by the nitrous oxide, and the other enzyme inhibited by the nitrous oxide is a thiamidylate synthase, which is required for the DNA synthesis. So it will lead to the defects in the DNA synthesis and lead to the inhibition of B12 dependent enzymes. So that due to inhibition of these two enzymes, it is going to result in megaloblastic anemia and peripheral neuropathies if used for longer periods of time. In blood than nitrogen. We have partially discussed this concept previously in the second gas effect. Due to the gas effect. And also, it has tendency to diffuse in air cavities. That's the reason use of nitrous oxide is contraindicated in surgeries which involve the air containing cavities. And diffusion hypoxia and second gas effect, as we discussed previously. Now we move towards the halothane. Is non-flammable, non-explosive, and is stored in amber-colored bottles. So color specific for each inhalational agent, and for the halothane, it is amber color. It is notorious for producing halothane hepatitis, and that was the reason for withdrawal of halothane from the market. Previously, it was used abundantly, but due to the halothane hepatitis, it has been withdrawn from the market. But the incidence of halothane hepatitis is minimal, 1 in 35,000. So, due to the hepatitis tendency, it should be avoided in patients with hepatic dysfunction, as is evident, and it can produce serious ventricular arrhythmias if combined with aminophylline. So, the patients receiving halothane should not be given aminophylline and vice versa in order to prevent these dysrhythmias. It is a potent bronchodilator and even can reverse asthma-induced bronchospasm. So in asthmatic patients, use of halothane is beneficial. Most abundantly used inhalational agent, second to the sevoflurane nowadays in our setups. It is a non-flammable volatile agent, and that is the reason isoflurane should not be used in pediatric age group patients, as it will lead to this ethereal smell will lead to the irritation of the airway in pediatric population, and ultimately the bronchospasm type fracture. And
isoflurane also produces coronary steal phenomena, which is more of a theoretical concern rather than a practical concern. Coronary steal phenomena can be explained in a way that in the patients in patients where there is already some kind of coronary blockade, uh, the vessels um, around this blockade, they are maximally dilated, and vessels cannot be dilated above that extent. Vasodilation in other coronaries, but the coronary where blockade is present, as it is maximally dilated already, so there will be no increase in dilatation or no increase in blood flow. And ultimately, the blood flow will be diverted to the other coronaries which are now vasodilated, thus leading to further decrement of flow through the blockade points. This is called coronary steal phenomena, and it can trigger malignant hypothermia. And patients with family history of malignant hypothermia should be avoided usage of isoflurane. And it is also having a bronchodilator properties, but less potent than the halothane, and leads to the electrically silent EEG at 2 meg percent. And desflurane, it is synthetic analog of isoflurane, where fluoride is substituted in place of chloride. Otherwise, the structure of both these inhalational agents is same, and it is used in specially designed vaporizers. These vaporizers are called Tech6 vaporizers. Special vaporizers are required because of this lower boiling point of desflurane. It boils at room temperature at high altitudes. So when being used in high altitude, it will lead to the boiling of desflurane in the bottle. That is the reason specially pressurized bottles are used for this desflurane usage. That will prevent the boiling of desflurane at room temperature. It has got fastest induction and emergence as well, and its degradation by beryllium produces carbon monoxide. So prolonged usage of desflurane with beryllium may lead to the carbon monoxide poisoning. And usage of soda lime prevents this complication. Sevoflurane, it is most abundantly used nowadays. It is non-pungent, sweet-smelling, and it is hypothesized to have single breath induction in pediatric populations. That is the reason, being non-pungent and sweet-smelling and single most rapid induction in pediatric population, it is the inhalational agent of choice for the pediatric population as well. But its characteristics also make it favorable for induction in elderly population as well. And um, but the major concern with usage of sevoflurane is its nephrotoxicity, and nephrotoxicity is due to the production of compound A, which is trifluoromethyl vinyl ether. And but this production of compound A is associated with the beryllium, which degrades sevoflurane to compound A. Compound A is a proven nephrotoxic agent. Um, and there are some factors which can lead to the nephrotoxicity, which is not evident in routine cases, uh, but in specialized cases where there is increased gaseous temperature, low flow anesthesia, higher sevoflurane concentration being used, and prolonged anesthesia, they lead to accumulation of compound A. But most studies have failed to detect postoperative renal function impairment with sevoflurane. And now the last inhalational agent for discussion is xenon. Xenon is an inert noble gas, and it is scavenged from atmosphere via a costly distillation process. That is the reason for xenon being the highest cost.
inhalational agent. Its MAC value is 0.71, and its anesthetic effects are mediated by NMDA inhibition. Its properties are more or less nearer to the ideal inhalational agent. That is, it is having little to no effect on cardiovascular system, hepatic and minimal effects on hepatic and renal system. Neuronal ischemia is prevented by Xenon, fastest induction and fastest recovery. All these features may make Xenon nearest to the ideal induction agent, but the highest cost of usage of Xenon leads to the free usage, leads to the prevention of free usage of Xenon during anesthesia. So this was all about the inhalational agents. Thank you for your concentration, audience. Thank you, Dr. Raza. And Sir, I end up here, sir. Any queries are welcomed if at the moment. yes, all the participants are hereby can add their opinion, can ask question as well. So also, sir, you can also give your input, sir. If there is something missing here, you can add on, sir. yes, Dr. Saqib is here. Yes. And one question So there is a diffusion diffusion hypoxia. Yes. Yes, sir. So diffusion hypoxia is produced due to the 35 times from the alveoli into the blood as compared to the nitrogen. When nitrous moves quickly into the blood while we turn it off, and while body is washing nitrous oxide off, same is the scenario that it moves rapidly from the blood into the alveoli as compared to other gases. So when it moves quickly, for example, consider if there are 100 parts of oxygen in the alveoli, but due to the rapid movement of nitrous, nitrous will occupy 50 particles in single alveoli and 50 particles of oxygen will remain. And it will lead to the nearly and this is called diffusion hypoxia. Hypoxia due to the highest rate of diffusion of nitrous oxide. And also asking about the second gas effect. Ji, Dr. Raza. Ji, sir. Question is about second gas effect. Sir, bar. second gas effect. The second gas effect is when nitrous is being used with another gas or another inhalational agent. So before understanding the second gas effect, we have to understand the MAC value. MAC value is basically the buildup of concentration of inhalational agent in the alveoli. So greater is the rise in the alveoli of the inhalational agent, greater will be its onset of action, greater will be its systemic effects as well. So when we are using another inhalational agent with nitrous, what will happen? Nitrous will move quickly into the blood, while the concentration of the other gas in the alveoli will build up. This build-up of concentration will lead to the rapid onset of action of the other inhalational agent. So the nitrous potentiate the effect of the other inhalational agent being used along with it. This is called the second gas effect. Thank you. Nice presentation, Dr. Raza. A detailed one. Thank you so much. And now if I am feeling that
For today, it's enough not to go for second presentation because Sir, it was so much lengthy presentation. yes, it's a 48 minute, 11 past 48. So, Yeah. so I think we can continue the discussion about this topic and any inputs Yes, from sir. participants and any opinion from participant about this presentation or topic of discussion. I think it's a better one. Dr. Shakil is here. डॉक्टर शकील सुन रहे हैं आप? आवाज आ रही है आपको? हैंड रेज करें, मैं आपको अनम्यूट कर दूं. ओके, किसी और का सवाल ली? यस सर. डॉक्टर साकिब, मैंने आपको अनम्यूट किया. Assalamu alaikum. Can you hear me, sir? यस यस. Yes. Very nice presentation. But the presentation should be slightly speedy because if you keep three presentations, then it should be slightly, the participant should increase practice during the preparation for a speedy presentation. Actually, a good presentation is which can be finished in 20 minutes. Yes. And we can make rules that the time for presentation will be 20 minutes and 10 minutes will be for discussion. And you can keep keep two topics for presentation and discussion. Or second thing is that nitrous oxide is out from our operation theater. I think for the last about 11 years, we have stopped using nitrous oxide in our anesthesia patients, thanks to the this terrorism, which led to the this stoppage of manufacture of nitrous oxide, and because some material were being used in making bombs by the terrorists, and so they stopped, and it was not available in the market, and we started using only oxygen, and then we continued with this practice. And now nitrous oxide is out from our practice, and many centers, they don't recommend this nitrous oxide for, and we have seen that the only thing for which we were using nitrous oxide was for analgesia. And you can use many other things for analgesia. So no, the halothane has been obsolete. Halothane is obsolete. It is not available in the market, and it is not being used nowadays. And the desflurane is not commonly used. I don't think that it is available in Pakistan. I have not seen it available. Isoflurane, sevoflurane are available freely and in all the setups, and these are very good inhalational agents. We usually use sevoflurane for the pediatric patients and isoflurane for the adults. And these two agents are very good for, and they don't cause much arrhythmias. And this is the beautiful thing with these things. And I could not understand the MAC bar. Can you, Dr. Ali Raza, can you explain what is MAC bar? Because I could not understand. I have first time, really, I have first time listened to this term MAC bar. Can you Sir, explain, please? Yes, please. Thank you. sir, this is nothing more than an eye catcher. It is simply the elaboration of the same MAC value at barometric pressure. That is 760, and it has to do with the effects in deep sea and at high altitude.
You can, if you have seen, written 1.3 and 2.3 in bracket ahead of this MAC bar. So with respect to high altitude, MAC variates. So MAC bar is the Your voice is interrupting. It's not I think continuous. unstable connection, net connection. Yes, sir, can you hear me now? Yes, yes. yes, yes. You are loud and Sir, clear. Please continue. Sir, MAC bar is nothing more than an eye catcher actually. It has to do with the barometric pressure. It tells that the MAC value changes with respect to the variation in the barometric pressure. Whether we go deep sea or whether we go at higher altitudes. The MAC value variates with the barometric pressure. This is MAC bar, sir. Okay, okay. Okay, Thank thank you. you. There is one question. I think this nitrous oxide about for the use in obstetric patients. For Sure. DNCs, we use nitrous oxide. No need to use nitrous oxide in these patients. Just Sir, you can use this TIVA in these patients, sir. and these should be avoided. Nitrous oxide should be avoided, and So also nitrous benzodiazepine. oxide has been obsolete throughout the world nowadays. It is of only hypothetic importance at the moment. And for the pain control, we can use the multimodal analgesia instead of exposing patient Exactly, to the nitrous oxide. exactly. Very good, Yes. very good. That is the understanding, and Sir. it avoids the diffusion hypoxia. It avoids the teratogenic effects, and it Yes, and also avoids developmental the problems, yes, yes, yes. Yes, and also the Thank you. pulmonary hypertension in the cardiac patients, worsening of the pulmonary vascular Okay, resistance. हाँ जी, okay. उसमें मैं अपना Thank you very much. I have finished. Over to Dr. Amir Furqan. जी जी सर, Thank you. थैंक यू सर। इसमें मेरा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ आपके साथ। आई एम वर्किंग इन कार्डियक सेंटर, और उसमें तो हम बिल्कुल ही नाइट्रस यूज़ ही नहीं करते। और हमारे पास पोटेंट मॉर्फ क्या कहते ओपियाइड एनाल्जेसिक अवेलेबल है, फेंटानिल एंड मॉर्फिन, तो उसको हम यूज़ करते हैं। बट इन गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, यूजुअली जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो यूज़ की जा रही है। और अभी भी हम उसी कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस पे चल रहे हैं कि अभी भी हम यहाँ पे अगर नाइट्रस का प्रेशर कम आ रहा हो या उसकी सप्लाई ना आ रही हो तो हम लिस्ट पोस्टपोन करते हैं। तो ये कुछ हमारे पब्लिक सेक्टर के इश्यूज हैं। बहरहाल उसमें जो एक ही लॉजिक है जिस पे डॉक्टर साकिब ने भी बात की कि ये एनाल्जेसिक पर्पस के लिए यूज़ होती है। तो एनाल्जेसिक पर्पस के लिए अब मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ कि मैं उसमें ओपियाइड इवन के किन्जा में अवेलेबल है एल्ब्यूफिन, तो उसको ही हम डिल्यूट करके, तो जैसे मसल रिलैक्सेंट यूज़ करते हैं तो 7 cc उसको भी हम दे देते हैं, तो उससे हमें मिल जाता है एनाल्जेसिक इफेक्ट और बड़ा स्मूथ जाता है पेशेंट। तो ये जो एक हाइपोथेसिस है, इस पर हमें थोड़ा सा जो हमारी न्यू जनरेशन ऑफ एनेस्थीसिया है वो डेफिनेटली इसको टून अप हो जाएगी। ओल्ड जनरेशन तो अभी इसको छोड़ने को तैयार नहीं है। मैं एक प्राइवेट सेटअप पे काम करता हूँ तो मैं यूज़ नहीं करता। वहाँ पे और कोई एनेस्थीसिया वाला आता है तो वो आके फिर ओटी वाला जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे लड़ाई भी करता है जी कि नाइट्रस यहाँ अवेलेबल क्यों नहीं है। तो अभी ये सर, मैंने अभी एक मैसेज किया है कि नाइट्रस कनेक्शन जो है ओआर से डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो लेकिन अब वो नाइट्रस पे जब क्वेश्चन शुरू होता है ये टॉपिक, तो हम इसके डिसएडवांटेजेस की एक लिस्ट बताते हैं लेकिन फिर भी यूज़ करते हैं। ये हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के थोड़े इश्यूज हैं। डॉक्टर रजिया ऐड करना चाह रहे हैं, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम। जी सर। नाइट्रस ऑक्साइड का यूज हम टोटली अबैंडन भी नहीं कर सकते यहाँ बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाइड रेंज ऑफ other intravenous agents like opiates, etc. Secondly, we always talk of the toxicity of nitrous oxide in the patient.
but I had done research on anesthetists and OT personnel and found out that 50% of the anesthetists had vitamin B12 deficiency. And this was published in JPMA. I will send the article details. Yeah, very good. So you all can go through it. That's great. इसको आप शेयर कीजिएगा ग्रुप में, हमारे जी जी पार्टिसिपेंट को वो हेल्प करेगी. मैं करती हूँ इंशाल्लाह, ग्रुप में करती हूँ शेयर. ठीक है. तो हमारे अभी हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हमीदुल्लाह फ्रॉम आगा खान यूनिवर्सिटी कराची. सर, कैन यू हेयर मी? आई हैव अनम्यूटेड यू, अगर आपको आवाज आ रही है तो. डॉक्टर हमीदुल्लाह, सर को प्रॉब्लम है थोड़ा है. जी शकील. जी सर जी. हाँ जी, आपका टाइम तो रजा ले गया आज. चलें, कोई बात नहीं सर. तो उसमें मेरा ख्याल अभी करते ये हैं कि जो आपके टॉपिक्स हैं, कि हमने ये डिसाइड किया था कि ये ईद वाला वीक है, इसमें ऑफ करेंगे. तो उसमें कर यूँ लेंगे कि नेक्स्ट फ्राइडे क्लास कर लेंगे. तो जो स्टडी तो लोगों ने की भी है और उसके ऊपर एमसीक्यूज क्विज भी कर लिया है, सबमिशन भी कर दिया एमसीक्यूज की, तो हम लेक्चर ले लेंगे नेक्स्ट फ्राइडे पे. तो आपकी यही जो प्रिपेयर की हुई है हमने, इसको हम नेक्स्ट ले जाएंगे. और किसी और पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन, कोई एडिशन, वांट टू से एनीथिंग? ये एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है कि Xenon का किसी का एक्सपीरियंस. Xenon इज नॉट अवेलेबल ऑन कमर्शियल बेसिस. ये कुछ ट्रायल बेसिस पे है, यूएसए में यूज़ हुई है, वेरी कॉस्टली. अभी ये कमर्शियल यूज़ में नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि किसी का कोई इसका पर्सनल एक्सपीरियंस होगा. सर मैंने एक बात पूछनी थी. जी जी. अभी सर डॉक्टर साहब के साथ डिस्कस कर रहे थे कि जैसे शॉर्ट प्रोसीजर टीएनसीज हैं, इस प्रोसीजर के लिए हम टीवा यूज कर सकते हैं. तो सर क्या हम इसको सेटल ब्लॉक में भी प्रोसीड करवा सकते हैं? ये केसेस टीएनसी हो गई, सर्कलाज हो गई, जैसे मैंने एक स्टैटिक प्रोसीजर्स. देखिए, ये जो ऑब्स्टेटिकल प्रोसीजर्स है ना, जिसमें यूट्रस इन्वॉल्व है, जो यूट्रस की मैनिपुलेशन है, यूट्रस की सप्लाई ऊपर से T10 11 भी इन्वॉल्व है और फिर L1 2 उस तक वो आ जाती है नीचे. तो अब जो आपको सैडल ब्लॉक है, वो तो सर्वाइकल ही सेगमेंट को देता है कवरेज. तो उसमें जब मैनिपुलेशन होती है, तो उससे जो ब्रेडिकार्डिया है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन, उसके चांसेस होते हैं और इवन पेशेंट अनकंफर्टेबल भी फील करता है. Saddle block is not an ideal one for manipulation of uterus especially. तो इसको अगर करना हो तो आप फुल फ्लेज सबरेगनाइड ब्लॉक में करें, अदरवाइज यू कैन यूज द टीवा. और उसमें अगर सिवोफ्लोरेन है तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं. राइट सर. जी, यहाँ पे क्लोज करें. यस डॉक्टर सफीउल्लाह. अस्सलाम वालेकुम सर. सर मेरा सवाल ये है कि कोई इनहेलेशनल के कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं सीएनएस पे, स्पेशली एज एन एस्थेटिस्ट जब हम इसको ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स के तौर पे ओटी में ले रहे होते हैं, मतलब अनअवेयर हो के भी हमें पेशेंट से या उससे मिल रही होती है मास्क में जब हम पेशेंट को दे रहे होते हैं, या इस पे कोई आर्टिकल, कोई रिसर्च, या फर्ज करें इस पे हम अगर करें तो कोई आर्टिकल इस पे आ जाए तो, क्योंकि कोई बिहेवियर या कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट, फर्ज करें कोई मूड में चेंजेस या इस तरह के कोई, मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ फॉर ईयर्स, इस तरह की कोई स्टडी तो नहीं है सर? देखिए, इस पे काफ़ी सारा लिटरेचर आपको मिल जाएगा. दैट इज़ बेसिकली डिपेंडेंट ऑन दी PPM.
उसके जो लेवल है ऑफ डिफरेंट एयर गैसेस, उस पे वो अपने इफेक्ट शो करता है। उसमें शॉर्ट टर्म भी है, लॉन्ग टर्म भी है। तो इस पे फर्दर जो है पार्टिसिपेंट में से किसी का कोई एग्जैक्टली कोई आर्टिकल किसी के जहन में हो तो कैन शेयर। तो इफेक्ट तो इसका आता है। अब इसमें जो इनिशियली आपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस किया होगा कि ये जो अभी ज्वाइन करते हैं एज ए रेजिडेंट, हम ओटी में जाना शुरू करते हैं, दैट वाज माय ऑन ऑब्जर्वेशन कि जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे ओटी से निकलने के बाद 3-4 घंटे बड़ी ज़बरदस्त नींद आती होती और वो अनकंट्रोलेबल होती थी। देन विद टाइम जो है वो चीज़ें थोड़ी सी एडजस्ट होना शुरू हो गई। तो इसका एक इफ़ेक्ट तो आता है रिपीटेड एक्सपोजर से। तो बाकी उसकी टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स जो हैं वो उसके ऊपर लिटरेचर को देखना पड़ेगा। अब एग्जैक्ट तो मेरे ज़हन में नहीं है, किसी के हो तो वो इसमें कर ले शेयर। जी सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पीपीएम पे है और इसका पीपीएम तो बाकियों से थोड़ा डिफरेंट भी है। और इसके अलावा सर अगर जो है ना, एक तो ये इफेक्ट्स आते ही आते हैं, और दूसरा ये कि हमारे ओटीज एज कम्पेयर टू फॉरेन अगर हम कंपेयर करें, मेरे ख्याल में स्कैवेंजिंग सिस्टम हमारा शायद इतना अच्छा नहीं है। बाहर का मेरा इतना एक्सपोजर तो नहीं है, लेकिन वो भी इसमें शायद इन्वॉल्व करता है पीपीएम में। और उसी के साथ उसी में ये चूंकि फिर लीक या एड ऑन कहें कि वो हो जाती हैं, तो फिर वो इफेक्ट इसका ओटी के स्टाफ पे या उन पे हमारे एनेस्थेटिस्ट के ऊपर होता होगा। जी डेफिनेटली, इसमें जो स्क्रीनिंग सिस्टम है ना, हम इसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, हालांकि ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इससे आपका जो पोल्यूशन इन ओआर है वो भी बढ़ती है। इवन कि अभी ये जो कोविड के हवाले से सारी डिबेट चल रही है, तो दैट्स आल्सो रिलेटेड टू दिस वायरल लोड, कि अगर आपका स्क्रीनिंग सिस्टम नहीं है और एक्सहेल आपके वहीं थिएटर के अंदर हो रहा है तो वो वायरल लोड को एडअप करता जाएगा विद टाइम। तो वो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं उसके इन्फेक्ट होने से और उसके इफेक्ट आने में। एंड द सेम इज विद इनहेलेशनल एजेंट्स आल्सो, कि जितनी वो विद इन ऑपरेशन थिएटर उसको एक्सहेल करेंगे तो उसका पीपीएम लेवल बढ़ेगा, और पीपीएम लेवल बढ़ने से आपको रिपीटेडली उस पर इफेक्ट तो आएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। डॉक्टर जैगम के काफ़ी सारे सवाल हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूं? जी डॉक्टर जैगम। जी सर, आवाज आ रही मेरी? जी जी, करें आप अपनी बातें शेयर जी करें। सर, मैंने हाँ जी सर, एक तो वो जो टेराटोजेनिक इफेक्ट ऑफ नाइट्रस की बात हम कर रहे थे, तो उसमें मैं ये पूछना चाह रहा था कि अब देखें, एक ऑब्स्टेटिकल पेशेंट है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी है। जैसे आपने पहले भी बात की कि हमारे कुछ सेक्टर्स, इवन के गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर में भी हम नाइट्रस यूज कर रहे हैं। तो जितने भी आप एक्सप्लेन कर लें, बट कुछ गायनेकोलॉजिस्ट की भी है कि आप नाइट्रस क्यों नहीं दे रहे हमारे पेशेंट का, अवेयरनेस ड्यूरिंग प्रोसीजर हो जाती है। तो उसके लिए इवन का हमने फॉलो भी के पेशेंट्स, उसमें फोरेन का जहां तक रोल है, तो मैं ये समझता हूँ कि नाइट्रस अलॉन्ग विद ऑक्सीजन और फोरेन, तो इससे हमने ये ऑब्जर्व किया कि अवेयरनेस ड्यूरिंग एनेस्थीसिया की जो प्रॉब्लम आ रही है हमारी सोसाइटी में या हमारे पेशेंट्स के फॉलो में, तो मैंने ये पूछना था कि एक ऑब्स्टेटिकल पेशेंट की नॉन ऑब्स्टेटिकल सर्जरी है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, से फॉर एग्जांपल हम उसके अपेंडिक्स कराने जा रहे हैं और वो दे आर विलिंग फॉर जनरल एनेस्थीसिया, तो कितने एक नाइट्रस ऑक्साइड अपने ट्राइटोजेनिक इफेक्ट उस जो बच्चे है उस पर करेगी, कीपिंग इन व्यू प्रोन्स एंड कॉन्स फॉर अपेंडिसेक्टमी हम कर रहे हैं। तो मुझे ये बात क्लियर नहीं थी कि हमें कितना एक अवॉइडेंस कर सकते हैं, या जो हमारी सर्जन है या टीम की डिमांड है कि नहीं यार अवेयरनेस ड्यूरिंग एनेस्थीसिया की कंप्लेन आ रही है, तो फोरेन को बढ़ा दिया जाए नाइट्रस ऑफ करके, या ये वो थोड़ी कंफ्यूजन थी। जी, कोई ऐड करना चाहिए इस क्वेश्चन के रिस्पांस में? अच्छा देखिए, उसमें जो नॉन ऑब्स्टेटिकल सर्जरी फॉर ऑब्स्टेटिकल पेशेंट है, जी सर। जी डॉक्टर साहब के इसमें ऐड करना चाहिए। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो है ना डॉक्टर जैगम, जो सर सर फर्स्ट ट्राइमेस्टर है ना, वो दैट इज द ट्राइटोजेनिक ट्राइमेस्टर ना। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जी में तो बिल्कुल कंट्राइंडिकेटेड है, नाइट्रस सर, फाइन ऑक्साइड आपने बिल्कुल यूज नहीं करनी है। दूसरा सर, फाइन बेंजोडाइजेपीन्स का जो है ना लिटरेचर में है कि ये डायज़ेपम जो है
ये ट्रेटोजेनिक इफेक्ट है ना, इसका है। जी सर, तो बिल्कुल। दूसरी ये है कि जो इनहेलेशनल एजेंट्स है ना, इनका इफेक्ट है, रिलैक्सेशन इफेक्ट है ऑन द यूट्रस। जी सो बिल्कुल सर, यू कैन एग्जैक्टली। फ्रीली यूज इनहेलेशनल एजेंट, आप ज्यादा भी ठीक सर। उसमें कर सकते हैं, कोई उसमें जो है ना उसका कोई साइड इफेक्ट्स उस तरह से वो नहीं आते हैं। ये ठीक सर। एक चीज हो गई। दूसरा ये है कि जो नॉर्कोटिक्स है ना, इनका जी कोई सर। ट्रेटोजेनिक इफेक्ट नहीं है। यू कैन फ्रीली ठीक सर। यूज एज एनाल्जेसिक्स नॉर्कोटिक्स इन दीज पेशेंट्स, बट दीज जो है एनसेड जो है, दे आर कंट्राइंडिकेटेड इन ऑब्स्ट्रैक्टिक पेशेंट्स। उसमें आप जी सर, ठीक। उसको नहीं यूज कर सकते, उनके ट्रेटोजेनिक इफेक्ट भी हो सकते हैं, उनके दूसरे भी इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो राइट सर, जितने राइट। भी ऑब्स्ट्रैक्टिक पेशेंट्स हैं, दे आर अंडरगोइंग सर्जरी अदर देन ऑब्स। मतलब जी सर। पेशेंट प्रेग्नेंट है, आप उसकी अपेंडिक्स करवा रहे हैं, हाँ ठीक है हाँ। ना, उसमें आप केटामीन भी, किसी ने अभी क्वेश्चन किया था कि कैन वी यूज केटामीन, यू कैन यूज केटामीन। केटामीन इज सेफ इन ऑब्स्ट्रैक्टिक एनेस्थीसिया, देयर इज नो कंट्राइंडिकेशन। वो केटामीन भी आप सही, यूज कर राइट। सकते हैं, आप प्रोपोफॉल भी यूज कर सकते हैं, थायोपेंटोन भी यूज कर सकते हैं। इफ कोई जी कोई सर। इंटरकंट्राइंडिकेशन नहीं है अगर उसमें, और उसके अलावा आप इटोमिडेट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हम्म। प्रोपोफॉल आप, अगर आपको लाइट लग रहा है पेशेंट, उसको अवेयरनेस का है, तो यू कैन गिव इवन शॉट्स ऑफ प्रोपोफॉल, ठीक है। ठीक सर, तो ठीक, आप समझ गया, उसमें बिल्कुल ठीक। 10 मिलीग्राम 20 मिलीग्राम आप उसके साथ उसको ना वो कर सकते हैं। सेकेंडली जो रिलैक्सेंट्स हैं, उनमें कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, वो आप नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड जो है ना, वो उसका सिवाय एनाल्जेसिया के और कोई हमें कोई इफेक्ट नजर नहीं आता, वो भी हायर कंसंट्रेशन में। और तो वो आप एक ये मिथ है, ये मिथ जो है ठीक ना सर। वो ब्रेक नहीं हो सकती जब तक कि आप देखते नहीं कि मैं जब यूज करता हूँ तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह मरीज बिहेव करता है। तो जी यू सर, कैन, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, तो आप उसको, बहुत सारे लोग जैसे सर ने भी अभी कहा कि वी आर नॉट यूजिंग नाइट्रस ऑक्साइड, लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, बड़ा उनको साइड इफेक्ट्स बताने पड़ते हैं, फिर वो जाके जो है ना वो फिर भी वो नहीं कहते, नहीं हमें नाइट्रस ऑक्साइड चाहिए। बिल्कुल तो सर, ऐसे पब्लिक क्योंकि सेक्टर मैंने में जो सर, है ना, हाँ, मैंने हाँ सर, जी, सॉरी, मैंने मेरा खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस करके देखा है। मैंने 30 पेशेंट्स को विद नाइट्रस केसेस किए कराए और 30 को विदाउट नाइट्रस ना। तो मुझे कोई खास डिफरेंस किसी में नहीं फील हुआ, मतलब विदाउट नाइट्रस वाले की जो आउटकम में कोई ऐसा कोई ड्रास्टिक इफेक्ट हुआ हो, और जिनको मैंने दिए उनमें। तो मैं भी इसी कंक्लूजन पे पहुंचा था अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में, कि अगर हम नाइट्रस नहीं भी देते अदर एनाल्जेसिक्स विद फुरेन, और वी कैन मैनेज एक एवरीथिंग इन चीज बेटर है, वे। हाँ, जी एक चीज अपने ज़हन में रखनी है कि सर। जब सर। आप 100% ऑक्सीजन देते हैं ना, तो सर। देन एल्वोलाई आर फिल्ड विद 100% ऑक्सीजन, जी ठीक सर। है। तो जब आप उसमें नाइट्रोजन नहीं होगी ना, आप जी सारे सर। एल्वोलाई 100% ऑक्सीजन से फिल्ड है, जी ऑक्सीजन सर। जब एब्जॉर्ब हो जाएगी तो एटीलैक्टेसिस जो है ना वो कॉज कर ठीक सर। सकती है, अगर आप फाइन, फाइन। प्रोलॉन्ग केसेस में कर रहे हो। तो रिकमेंडेड ये है कि आप मेडिकल एयर यूज करें, ठीक है, ठीक सर, उसमें फाइन। 50% आप एयर यूज करें, आप इंक्रीज भी कर सकते हैं ऑक्सीजन, लेकिन आप जी जी सर। नाइट्रोजन को बीच में रखें ताकि जो है एटीलैक्टेसिस इंक्रीज ना हो। अगर आप बिल्कुल सर, प्रोलॉन्ग्ड सही। करा रहे हैं, देन यू शुड मिक्स जो है मेडिकल एयर विद दी ऑक्सीजन। आप परसेंटेज तो आपको उसमें आ रही होगी, तो उसमें जी जी ये बिल्कुल। रिकमेंडेड है। लेकिन अगर मेडिकल एयर नहीं है तो कोई जी बात सर। नहीं, और शॉर्ट केस है, 1 आवर है, इस तरह यू कैन यूज 100% ऑक्सीजन। उसमें राइट सर। कोई, हाँ, ऐसा कोई अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं आता कि कोई हाइपोक्सिया, एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा हाइपोक्सिया का रिस्क उस तरह से वो नहीं आता है। तो एडेड एडवांटेज ये है कि आप, अगर पेशेंट को हाइपोक्सिया होता है तो सबसे पहला रिस्पॉन्स आपका क्या होता है, आप नाइट्रस ऑक्साइड ऑफ करते हो, जी बिल्कुल ठीक है। करते हैं, बिल्कुल करते हैं सर, सही तो बात है। आप अगर और नाइट्रस ऑक्साइड दे ही नहीं रहे तो वो आपका पहले ही वो कवर हुआ है कि आपका बिल्कुल पेशेंट ऐसे जो ही। है उसको हाइपोक्सिया होने के चांसेस नहीं है। बिल्कुल सही, समझ तो गया। दूसरा कैविटीज में ये अब्जॉर्ब होगी, वहां पे वो ट्रेटोजेनिक इफेक्ट है। जी और बिल्कुल सर। एक, सॉरी टू से, लेकिन हमारे जो जितने भी सेटअप्स हैं, मतलब हो जी सकता है सर। कि एमआईसी में या आर के रावलपिंडी उसमें आई आरआईसी में किसी में हो, लेकिन कहीं पे भी स्कैवेंजिंग सिस्टम अवेलेबल ही नहीं है। हाँ बिल्कुल सर, ऐसे ही। हमें जो है ना कोशिश करनी चाहिए कि स्कैवेंजिंग सिस्टम आना चाहिए, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए जो है ना वो
एक ज़रूरी चीज़ है कि जो एनेस्थेटिस्ट है उनका प्रोफेशनल हैजर्ड, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड जो है ना वो है कि उनको जो है अफेक्ट होता है उससे, मतलब बिल्कुल सर, राइट। उसमें इनहेलेशन एजेंट का भी इफेक्ट होता है और नाइट्रस का भी जहाँ पे यूज हो रही होगी उसका भी इफेक्ट होगा। तो उसमें एक मतलब ये है कि आप क्लोज सर्किट यूज करते हैं तो जी फिर सर। बहुत कम इफेक्ट आता है। वो आप ओपन सर्किट यूज करेंगे, ज्यादा गैस फ्लो करेंगे तो जी फिर बिल्कुल ज्यादा ऐसे ही जो है सर। ना वो उसमें जो है ना वो आता है। ठीक है, तो समझ दैट गया वाज, सर, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी थैंक यू सो मच। हम अपने टाइम से एक्सीड कर गए, मेरे ख्याल में यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड द नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन IV इंडक्शन एजेंट एंड मसल रिलैक्सेंट एंड रिवर्सल एजेंट। तो जो आज का हमारा टॉपिक लेफ्ट ओवर रह गया, अगले वीक में आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, वो तो आप पढ़ चुके, तो इंशाल्लाह क्लास ज़रूर करेंगे। विद दिस, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड अल्लाह हाफिज़।